Hello everyone, I am Mohammed Shoaib. So today we are on live session with our students of Mari State University. So today our topic is like about practical exposure and about FMG preparations. So like it's very necessary for an Indian student to know like what about the practical and theoretical part in Mari State University, because sometimes students might think because they are like Indian citizens and they have to come back India and give their exit test or FMG whatever according to their general rules and regulations. So like it's better to know for the new students like about our practical education too, because there's like a misconception that abroad university doesn't provide such a practical exposure as in India, but that is not in case with all universities, right? So yes, we have to know with our students, because it's like a honest interview from our students, because only they can give their and they can share their own experiences. So welcome to our students of Mari State University. So beginning with our topic, it's like very necessary to know when do you start with your practical education in Mari State University? Yes. हेलो गुड मॉर्निंग। मैं हर्षित वर्मा मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि जनरली एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, तो ये तो वैसे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं। बट ऐसा नहीं है हमारे जो हमको जो यहाँ प्रोग्राम होता है डॉक्टर का, उसमें साथ में हमें नर्सिंग का भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमको जिसमें हमको एक बेसिक ट्रीटमेंट सिखाया जाता है। तो जैसे कि एनाटॉमी हो गया तो इसमें हम कैडावर वगैरह दिखाए जाते हैं हमें। फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हो गए। बट जो नर्सिंग होता है इसमें हमें जब ये मतलब कंप्लीट हो जाता है एंड में, तो 1 मंथ का एक हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है जहां हमें हाउ टू मेजर ब्लड प्रेशर वगैरह, इंजेक्शंस देने सिखाए जाते हैं। और तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है और ये हर ईयर होता है। और जैसे आपका वेकेशन है तो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फॉर्म मिलती है जिसमें कि आप इंडिया में जाके किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब जब तक आप इंडिया में हैं। उसके बाद अब जब आप यहाँ वापस आएंगे तो फिर आप यहाँ फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप इंडिया में इंडियन मतलब पेशेंट्स देख रहे हैं। तो क्योंकि एट द एंड आपको इंडिया में ही रहना है, तो वहाँ की चीज़ों से आप मतलब रूबरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं फर्स्ट ईयर में जब था, तो मैं जब इंडिया गया था तो मैं हॉस्पिटल जाता था। मैंने कुछ 15 डेज हॉस्पिटल गए, तो वहाँ मैंने बहुत सारी प्रोसीजर्स देखे। तो अब जब मैं उन प्रोसीजर्स मतलब देख लिया, जैसे लंबर पंचर मैंने फर्स्ट ईयर में ही देखा, तो अब जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि अरे ये तो मैंने देख लिया है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि हमको इंडिया में भी मौका दिया जा रहा है कि आप जाके वहाँ सीख सकते हैं। तो मतलब कि बहुत ही अच्छा ये चीज़ है कि सीखने का मतलब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। So that's a great information about your own experiences that you shared with us. So yes, so you are eligible to even practice in Indian hospitals too. No matter what, like you're just a student, still you can practice as a like a assistant during your interns, right? So that's a good thing that which is provided by our university. So talking about since Russia is like a Russian language speaking country, it's like very necessary to know whether the practical teaching is also in Russian language or in English language, right? Because usually Russian people say that they do all practicals and their internship will be in Russian language. But is it the same case with our Indian students? What is the medium of the practical education? हेलो, मैं सर भावुक चाह, मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ राजस्थान इंडिया से। जी, हमारी जो केवल प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं, हमारी जो पूरी एजुकेशन है वो इंग्लिश में ही है।
अदर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें बायलैंग्वेज है, तो लोगों को लगता है कि सारी ही यूनिवर्सिटी बायलैंग्वेज है, पर ऐसा नहीं है। हमारी जो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, और उसके अलावा हमारे जो इंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं सब इंग्लिश में ही देते हैं। तो और कुछ हमारे जैसे सीनियर्स होते हैं यहाँ पे, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो पुराने लोग हैं यहाँ पे, उनको इंग्लिश नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे लोकल्स कम इंग्लिश बोलते हैं। तो उसके साथ हमें फिर यूनिवर्सिटी ट्रांसलेटर भी प्रोवाइड करती है। वहाँ पे वो ऑन द स्पॉट हमें समझाते रहते हैं और सब कुछ ट्रांसलेट करते रहते हैं, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है, सब कुछ अच्छे से बताते हैं। और एग्ज़ाम वगैरह भी हमारे इंग्लिश में ही होते हैं, तो पूरे थ्रू आउट 6 ईयर तक हमारे एग्ज़ाम वगैरह इंग्लिश में ही होते, तो ऐसा नहीं है रशियन लैंग्वेज में हमारी नहीं होता, इंग्लिश में ही होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें फिर। So you haven't faced any problem till now. So you are in which year now? थर्ड ईयर। So yes, third year. You have come a long, long way. So from first year to the third year, you haven't exposed to Russian language internship, right? So that's a good thing that you are doing your internships in English language. So that's a beneficial for Indian students. So talking about affiliated hospitals, because every university has their own hospitals, because we study in a medical university, and there must be like affiliated hospitals in order to get internships, and also in order to get exposed to the patients, and also like if there is some emergency we need medical help. So talking about affiliated hospitals in Mari State University, what can you say about that? Yeah, good morning. My name is Chris Prasad. I'm a third year medical course student at Mari State University. At the present time, we have approximately 15 hospitals, medical hospitals that are affiliated to the Mari State University, and numerous other polyclinics or healthcare centers that have collaboration or are working closely with the professors or the researchers at the Mari State University. The most important of all is the Central Republic Hospital for the War Veterans. Many of our professors are actually full-time doctors or researchers there. One of our professors, greatly esteemed professor, Dr. Azim, he is an doctor, renowned doctor in the entire Mali State Republic, as well as a great professor of physiology. Now, as we can say that most of our professors, teachers, they work closely, they tie closely. They are all, most of our professors are doctors. They all work in some hospitals, whether it be Central Hospital or Respublika Bolnitsa. And we can proudly say that every year when our practical semester begins, we get an opportunity to work closely with these professors, with our doctors, or the medical professionals working within the hospital. We are exposed to the medical environment right at the epicenter. We know how does the hospitals work, where to begin and where to end our day. What are all the things that are given into given for the first aid, for the clinical treatments, for even what we need to do if we are with a patient in an ambulance. We have been shown, we have been tested about each and every things that are given. I would say that are more better than what our counterparts study in India. What can I say more? We can also say that all of these, even though most of the general folks, they don't speak Russian they don't speak English. My mistake. They don't speak English at a very great level. But the medical staff and the medical professionals, they are all habituated with the English language. They have all worked in European countries or some other North American or Central American countries. Most of our professors are every year they need to go on an medical expedition throughout various around the globe. They work closely with the World Health Organizations and also the European Union, since since Russia also has some parts within the European continent. And while this is all being taught within the universities of ours, most of the language we gain is through practical knowledge rather than the theoretical knowledge. Before people here believe that the more you work harder in the field, the more we get to know. And I would like to conclude my time. I would say that whatever I have learned throughout these 3 years in Mari State University, I am quite
confident that the upcoming 3 years and even the upcoming medical years of my life will be great beneficial for me as long as I have been taught at Mari State University. Thank you very much. So that's great. Thank you for sharing your experience. All the best for your future career too. And yes, talking usually we think about like going back to India after our 6 years of medical program, right? So like it's very people might think that we get FMG coaching only after our 6 years. Maybe we take a coaching center in India or some other place, right? So it's like, but Mari State University provides FMG coaching from the very beginning. So I wanted to know like from which year do you commence with your FMG coaching? तो हमारी यूनिवर्सिटी में एफएमजी कोचिंग जो है वो हर ईयर प्रोवाइड की जाती है और ऐसा नहीं है कि आप एट द एंड तक आप कोचिंग अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ आपका प्रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप लास्ट टाइम अच्छे से उनके नोट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ये कोचिंग जो है हमारी रूस एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और इंडिया से डॉक्टर्स आते हैं। अभी हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी जिसमें डॉक्टर प्रियांश जैन आए हुए थे। तो उन्होंने हमें 1 मंथ तक सारी मतलब क्लासेस दी बायोकेमिस्ट्री की, तो बहुत ही बेनिफिशियल थी। इवन उनके जो नोट्स थे वो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल हुए। हमको मतलब बहुत हेल्प मिला कि एक्स्ट्रा मतलब कुछ नोट्स नहीं बनाने पड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। तो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें भी बहुत ही फ़ायदा होता है उसका। So you were like very much comfortable with the Indian professors too. So what were the qualifications of the Indian professors who come from India to teach FMG classes? What were their qualifications? तो जो इंडिया से टीचर्स आते हैं सारे पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, MD MS। तो जैसे मैंने डॉक्टर प्रियांश सर की बात की तो वो MD बायोकेमिस्ट्री हैं, तो उनका एक लेवल अलग होता है और वो सारे बड़े बड़े कोचिंग से होते हैं। ऑलरेडी 4-5 ईयर एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और मे बी इससे ज़्यादा भी। तो मतलब बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाते हैं। So you get a gained experiences, well gained teachers, so that you learn more from their own experiences, right? So yes, talking about some students might think that after completing their medical course, they wanted to travel to other destinations like USA or UK. So do we have coaching for such exams in our Mari State University? So who can say about that? Yes. हाँ, तो FMG तो जैसे कि अब सबको पता है FMG हट चुका है, अब नेक्स्ट आ गया है। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट के साथ साथ USMLE की भी प्रिपरेशन दी जाती है जो कि रशियन टीचर्स देते हैं 4th ईयर के ऑनवर्ड 4th ईयर के बाद। उसमें क्या होता है कि जनरली जो USMLE होता है वो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड होते हैं। तो क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं रशियन टीचर्स वो 4th ईयर से ऐसे क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर देते हैं, लेंदी केस बेस्ड क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है कि एक हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और हमें कैसे मतलब अगर आप USMLE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं जो कि यूके के लिए होता है, तो उससे मतलब एक आइडिया हो जाता है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है और उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए। So that's great that you get coachings for other exams too apart from our Indian exams, FMG, because now FMG is replaced because we have NMC bill passed. According to that, we have our next examinations. So I think according to our next exam preparation, we also get coaching from Mari State University. So talking about teachers and professors who are coming from India, do we have any quality difference between Russian professors and Indian professors? Is there any quality difference? हेलो, मेरा नाम शिव शंकर साहू है। मैं थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ और जैसा कि हर्षित ने बताया कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर से ही नेक्स्ट की कोचिंग चालू हो जाती है और हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और जो
क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है वो इक्वल होता है, एकदम सेम होता है, क्योंकि इंडिया से ही प्रोफेसर्स आते हैं जो रूस एजुकेशन मैनेज करती है। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारे पढ़ाए जाते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। और भैया ने बोला एक बात कि जब कंप्लीट हो जाता है, जब हम यहाँ से एमबीबीएस की डिग्री ले लेते हैं उसके बाद क्या स्कोप्स रहते हैं। तो पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि फोर्थ ईयर से हमारी पहली बात कि हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी यूएस असेंबली के लिए सर्टिफाइड है। और उसके लिए फोर्थ ईयर में नोट्स दिए जाते हैं और जो मेडिकल फैकल्टीज़ हैं, और दैट्स आई कंक्लूड। So yes, there is no quality difference between teachers from India as well as teachers from Russia, right? So even Russian teachers provide the same quality of education as that of other teachers does. So yes, we wanted to know who organize such teachers to come here and provide their coaching for FMG or USMLE. Which source provides that? So, as we all know that after 6 years of graduation, after graduation, there are many destinations that needs to be explored. The most important, the most common of them all is going back to our motherland, to India, to serve our country. And for that, we need to clear out FMG, which is now about to become next, which hopefully will begin soon. So, however, things might look a little complicated for students who are right now in India. It was the same for us when we were back in India. So it's quite not that actually complicated. We have professors, we have experienced teachers, experienced doctors that come all the way from India to our university at Mari State University. The Rus Education, the Rus Education provides us this platform. They provide us well-renowned and well-educated and well-experienced professors having a minimum experience of 5 years, and some of them are even having experience of 15 to 20 years. So all of the subjects, be it clinical or preclinical subjects, they are being taught each year. By the end of our semester, every professor from all subjects, they come to our university, they teach us. We all sit down together as one student regardless of our course. This also help us in one way. It help us that for the students who are new to this, they will get to learn something new, and for the students who are already accustomed to these subjects, they will revise them, because we know revise makes us better. So what I can say more is that professors who are also teaching our common professors who are in Russia, they are the university professors. They give us the practical knowledge. They give us the basic theoretical knowledge about the USMLE examination. It is the second most desirable destination for many students in India and abroad to work in the US, to become a doctor in the US. And our professors, they are already well experienced with the USMLE examinations. From the 4th year of the semester, we begin our course learning for the USMLE. All of our professors, they begin to teach us, they begin to guide us for the USMLE examination. And regarding the next examination, I would say that since I've already told that the professor, they are already experienced teacher. They give us the knowledge, both basic and in-depth knowledge, that are required to pass the next examination within the very first attempt. And many students think that it is a very difficult examination next. Sure, everything is not easy. And that's why the professor, they make sure that we clear our doubt as soon as possible within the time, so we can revise more and more to secure a better and better marks at a very less cost of time. Thank you. So keeping your point intact, it's very important to know that usually parents think that abroad, after completing medical course from abroad, students usually, they say that it's a misconception. They say student doesn't clear their FMG examinations or MCI, whatever. They worry about sending their child abroad. They say they are not easy to clear. But the fact is it's all depends upon, it's all in the students' hands to clear their exams. At the end of the day, it's only them.
teachers are doing their hard work, and we get all sorts of help from Rus Education as well as from university. It's through like in our own hands that we need to work harder and harder. So yes, that's a good thing, Shad. Now, talking about internship, coming back to our Russian hospitals, what kind of internships and what kind of medical procedures have you been taught in Russian hospitals so that you like it's very easy for you to go ahead in your medical career? What kind of medical procedures have you learned? जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि यहाँ फर्स्ट ईयर से मेडिकल मतलब हॉस्पिटल जाना मतलब हॉस्पिटल एक्सपोजर मिल जाता है हमको। तो एक्चुअली क्या होता है कि रशिया में क्या होता है कि थर्ड ईयर से सर्जरी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सर्जरी एक क्लिनिकल सब्जेक्ट है। तो उससे क्या होता है कि आप जैसे पढ़े सर्जरी, उसके बाद हॉस्पिटल ले जाएंगे आपको, तो स्टिचिंग वगैरह करना सिखाया जाता है। तो ये मतलब थर्ड ईयर से मतलब ये ऑल ओवर द 6 ईयर हमारा हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है हमको यहाँ पे, जहाँ अलग अलग बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे मेरे को फर्स्ट ईयर में सिखाया गया था कैन्यूला लगाना, इंट्रामस्कुलर लगाना। तो ये सब जो मैं सीखा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ये सब सीखा, और अब मेरा जैसे थर्ड ईयर शुरू हो रहा है तो साथ में सर्जरी के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो अब जो होगा तो मैं बताऊंगा आपको। और ये मतलब पूरे 6 ईयर तक मतलब हमारा चलता है। So that's a good thing. Have you have you all thought before that that you have taken a wrong decision by coming Russia or not? Are you like very comfortable with the coaching, with your stay? Is that true? हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया यहाँ के। क्योंकि जब मेरा नीट नहीं निकला था तो मैं सोचता था जाऊँ नहीं जाऊँ। मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि कैसा होगा, वहाँ से आके क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बट मेरे जो ब्रदर थे वो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से गाइड किया। और फिर मैं रूस एजुकेशन के थ्रू यहाँ पे आया, और उसके बाद अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया, बल्कि मैंने अपना एक एक्स्ट्रा साल बचाया। तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, एंड थैंक यू रूस एजुकेशन। So that's an important message for every students, like not to drop their year. Instead, they have to get enrolled into the abroad universities if they are not enrolled into the Indian universities. Yes, of course, if they are getting enrolled in a government university, that's fine. But if they doesn't get a seat in India, then of course they must look for other opportunities in abroad, because we have a vast opportunity and the quality of education is also very excellent as of other countries. And talking about like internships again, do we pay any extra like amount as far as in India, like certain hospitals charge a certain amount for their internships? Is it the same in Russian hospitals too? So, frankly speaking, I have been to the hospitals, the affiliated hospitals of the Mari State University, and several times. I have worked closely with our professors who are also doctors there. And frankly speaking, I have never been asked any kind of fees or any kind of payment required for that. And I believe that it's a very best thing for us, because students are students. They don't have lots of money to always pay for each and everything, and that's a very good thing for us. So you don't pay anything extra for your internships, right? No. So that's a good thing that you do your internship without any like problems, financial issues, etc. So yes, I think viewers who are watching this video, live session would have like accomplished with all your doubts. And yes, of course, if you have any other doubts, you can like call our like branch people of Rus Education for further details. And if you have any queries, you can also inbox in this live session. Yes, I think we will end with our live session, and in the future videos we will like start with other topics. So yes, thank you so much, and thank you Rus Education for providing such a platform.